morning, students. You must have seen the mesmerizing waves of the ocean and the fishes swimming in it. We are delighted and mesmerized by the scene, but today we are polluting these seas and oceans with plastic and other trash, due to which the oceans and seas, which provide delight to us, are losing their own existence. To save the oceans from the pollution, we celebrate 8 June as World Ocean Day. Myself, Sudha Gupta, today I am going to tell you about this day. The concept of World Ocean Day was originally proposed in 1992 by Canada's International Centre for Ocean Development and the Ocean Institute of Canada at the Earth Summit on Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil. World Ocean Day was officially recognized by United Nations in 2008. This international day is celebrated to understand importance of ocean, which provide habitat to millions of marine species. Our planet Earth is made up of 71% water, among which ocean hold major part of our planet's water. Oceans produce more than 50% of Earth's oxygen and absorb carbon dioxide and thereby balance our environment. This day focuses on increasing pollution in oceans and spread awareness on environmental issues. On this day, governments, NGOs, and schools conduct cleanup drives at beaches to raise awareness on ocean conservation and cleanliness. World Ocean Day reminds us of importance of ocean and to be mindful of our harmful activities to keep our environment clean for a healthy tomorrow. Every year it has different theme. This year's theme is the ocean life and livelihood. In celebration and support of the life and livelihood that the ocean sustains, United Nations World Ocean Day 2021 will features keynotes, panels, discussions, and presentations that spotlight biodiversity, latest ocean discoveries, the interconnecting between the ocean and its ecosystem, and more. Thank you and happy World Ocean Day to all of you. Now, see the performance of Little Champs on World Ocean Day. Hello everyone, I am Shagun.
I am in 10th standard in KM Public School Bhiwani, and I am here to present a speech on the topic of World Ocean Day. So as you all know, World Ocean Day is celebrated on June each year across the world. The idea of World Ocean Day is first recognized on 1992, but it is finally adopted in 2008. The planet Earth is made up of 70.9% of water, through which oceans play a major role in the water of the planet Earth. Many people throw their factories waste in water bodies, in ponds, rivers, and in oceans. Through that pollution, thousands and lakhs of marine animals, birds, turtles are killed by marine water pollution. We should keep our water safe because oceans provide us 70% of oxygen we breathe. So we should keep our water safe. So stay home, stay safe, and thank you. माननीय अध्यापक एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं ख्वाहिश बंसल कक्षा 7वीं स से आप सबके सामने विश्व महासागर दिवस के बारे में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गीत मधुर गाती है ये सागर की लहरें, वायुमंडल भारती है ये सागर की लहरें, जब अपनी मस्ती में खाती है हिलोरे, टूट को छूने जाती है ये सागर की लहरें, सिपी के प्रमुख में जब बन जाती है कीर्ति, मोती बनकर जाती है ये सागर की लहरें, मूल्यवान नदियों को गोदी में समेट किनारे लाती है ये सागर की लहरें, पूनम का चंदा है चंपे पे मुझसे हलचल से भरती है ये सागर की लहरें, कष्ट झेलते चाहे नाविक हो जितना भी हो, चुनाव सिखलाती है ये सागर की लहरें। धन्यवाद। मैं गहरा नीला समुद्र आपका विशाल सहयोगी हूँ। आपको भोजन प्रदान करता हूँ, जलवायु को नियंत्रित करता हूँ, दूर के तटों को जोड़ता हूँ, सामाजिक और आर्थिक विकास के स्रोत के रूप में मानवता की सेवा करता हूँ। लेकिन आज मैं खतरे में हूँ क्योंकि आज आप लोग मुझ में प्लास्टिक डाल रहे हैं जो मुझे प्रदूषित कर रहा है और इसके कारण मेरा अस्तित्व खतरे में आ गया है। मेरे अंदर जो जैव विविधता व्याप्त है वह भी खतरे में आ रही है और मेरे ऑक्सीजन के स्तर को कम कर रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्वच्छ रखिए ताकि मैं आपके भविष्य में काम आ सकूं। मैं विशाल गहरा नीला समुद्र आपका सहयोग। Oh no, there is so much garbage in the water, mainly plastic bottles and polythenes. How rubbish some people are who throw garbage in water bodies and pollute it. In fact, we all know that water is essential for our life. There are many kinds of water bodies like seas, oceans, lakes, rivers, ponds, etc. You might have heard about aquatic plants and animals in your books. They survive in water, but have you actually thought how cruel we humans are? We know that plastic is non-biodegradable in nature, then also we throw it in water bodies and pollute it. Think about the life of aquatic plants and animals, which is in danger. They have become one of the endangered species. It causes suffocation, starvation when they consume this plastic and due to which they die. Almost 700 species in the world are adversely affected by the consumption of plastic, which mainly includes the life of aquatic plants, animals, the fishes, whales, turtles, etc. There are huge areas in oceans where plastic is gathered and it began to negatively impact on the natural environment also. The situation is getting worse and worse every day. What can be done? What can be the solution of this problem? We can make our small efforts which will result in enormous benefits. We should minimize the use of plastic. We should avoid buying plastic bottles, plastic disposable material as much as we can. Try to use more and more reusable bags. Use jute bags for shopping purposes. In short, follow the 5R principle that says reuse, reduce, refuse, recycle and repurpose. Today, I, Bhavya, have told you all this as because
today is World Ocean Day. This day is celebrated every year on 8th of June in all over the world. The purpose of this day is to create awareness among people of the impact of human actions on the ocean. So, we should do promise to ourselves that we have to conserve the life of aquatic plants and animals. Thank you. मैं दिव्यांश शर्मा कक्षा छठी से आपके सामने मैं समुद्र के गुणों को कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। यह शेर की तरह धाड़ता है, यह शेर की तरह धाड़ता है, फिर भी इतना शांत और ईमानदार है। एक परिष्कृत हीरे की तरह, एक परिष्कृत हीरे की तरह। यहाँ बहुत सारे सौंदर्य लुक्स हैं। यहाँ समुद्र में आपको सच्ची सुंदरता मिलती है। यहाँ समुद्र में आपको सच्ची सुंदरता मिलती है, फिर भी दुनिया घेरे में छिपती है। सागर वह है जहाँ तुम रहस्य पाते हो, सागर वह है जहाँ तुम रहस्य पाते हो, जहाँ चीजें रहती है, मर जाती है और सो जाती है। सागर वह है जहाँ तुम विचार करने जाते हो, सागर वह है जहाँ तुम विचार करने जाते हो। यह मन, शरीर और आत्मा को शांति देता है। सागर में मैं अक्सर घूमने जाता हूँ, सागर में मैं अक्सर घूमने जाता हूँ। यह मुझे मेरे लक्ष्य में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। धन्यवाद। Good morning everyone. I hope you are safe at your home. First, I introduce myself. I'm Rakshit from 8th E. I would like to say some important facts about the World Ocean Day. The purpose of the day is to inform the public the impact of human activities on the ocean, develop a worldwide movement for the citizens on ocean, and mobilize unit on the world's population on a project for sustainable management of the world's Ocean Day. Ocean Day was declared as 8th June 1992 in Rio de Janeiro at Global Forum, a parallel event at Human Development, which provide an opportunity for non-government organization and civil society to express their views on environmental issues. Thank you. प्रिय दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं कक्षा छठी का छात्र हूँ। आज मैं आपको महासागरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस संसार में 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर, यह प्रशांत महासागर के बाद दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। जो हमारा तीसरा है उसका नाम है हिंद महासागर। यह महासागर दक्षिणी भारत से 5069 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा है हमारा अंटार्कटिक महासागर, यह दक्षिणी महासागरों से घिरा हुआ है। अटलांटिक का 58% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। पांचवा हमारा है आर्कटिक महासागर, यह महासागर महासागरों की सूची में सबसे छोटा महासागर है। Good morning, myself Vidhi. I am a student of KM Public School. I am very happy that my teachers gave me a chance to recite a speech on World Ocean Day. It is an international day that annually takes place on 8th of June, and it was originally proposed in 1992 by Canada's International Centre for Ocean Development on Earth Summit on UN Conference in Rio de Janeiro, Brazil. The purpose of celebrating this day is to inform the public about the impacts of human activities on oceans and to develop a worldwide movement for the sustainable existence of oceans. Every year it has a new theme, and this year's theme
is ocean lives and livelihoods. Thank you. नमस्कार, मैं गरिमा छठी से आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वो सुंदर लहरें सागर की, वो सुंदर लहरें सागर की, वो तट को छूने बढ़ती हैं, तट को छूकर हंसती हैं। तट की रेत उनकी मंजिल है जो हर बार एकत्रित करती है। वो भूली नहीं है उस सागर को जिसमें वो उत्पन्न होती है। वो उसमें ही नाचती, खेलती और उसमें ही सोती है। वो कुछ अपना भी हिस्सा खोती है जो उड़ जाता है आसमान में, फिर से बारिश बनकर बरसता है। कुछ सागर में, कुछ जन्नत जहाँ में, कुछ सागर में, कुछ जन्नत जहाँ में। वो पराई वस्तु भी नहीं रखती है, सब एकत्रित कर वापस दे जाती है। खुद तो ठंडी होती है पर तट भी ठंडा कर जाती है। खुद तो ठंडी होती है पर तट भी ठंडा कर जाती है। चांद की सफ़ेद रोशनी में खुद को सुंदर दर्शाती है। चांद की सफ़ेद रोशनी में खुद को सुंदर दर्शाती है। दूर नीले आसमान से बहुत सुंदर नज़र आती है। शर्माकर महासागर से उसमें ही छिप जाती है। वो सुंदर लहरें सागर की, वो तट को छूने बढ़ती हैं। धन्यवाद। Into my thoughts and into a dream, and in this dream I am a fish swimming freely wherever I wish. Hello friends, my name is Sanya. I am from class 9th in KF Public School. Today we are talking about the World Ocean Day. The World Ocean Day was celebrated in Rio de Janeiro. It was now celebrated in 8 June every year. It was first celebrated in 1992. It refers to the chaotic but useful oceans also. It celebrated the valued existence of the ocean. The World Ocean Day was celebrated in the honor of the oceans. We believe that almost all of the oxygen came from the rainforest, but 70% of oxygen came from the oceans. 90% of trade is carried in the ships throughout the world ocean. Ocean water has a large capacity to absorb carbon dioxide. The ocean absorbs half of the heat before it reached the land. Thank you. Have a nice day.